Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to tutorial 28 part 1. Friends, in this tutorial I will tell you about the informal phrases in Korean language. The informal phrases in Korean language are used while speaking to people younger than you or to your friends. दोस्तों आज का ट्यूटोरियल है वो है इनफॉर्मल फ्रेजेस इन कोरियन लैंग्वेज। ये इनफॉर्मल फ्रेजेस इन कोरियन लैंग्वेज आप उसी वक्त बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बोल रहे हो उन लोगों से जो आपसे उम्र में कम हो या आपके दोस्त हों। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। अन्योंग, अन्योंग इन इंग्लिश इट मीन्स हेलो और हाय, और उर्दू में इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम। चल जिने, चल जिने इन इंग्लिश इट मीन्स हाउ आर यू, और उर्दू में इसका मतलब है तुम कैसे हो। सो नेक्स्ट। मन्ना सो फंगावो इन इंग्लिश इट मीन्स नाइस टू मीट यू, और उर्दू में इसका मतलब है तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुहे, मोहे इन इंग्लिश इट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, और उर्दू में इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो। इंग, इंग इन इंग्लिश इट मीन्स यस, और उर्दू में इसका मतलब है जी हां। आनी इन इंग्लिश इट मीन्स नो, और उर्दू में इसका मतलब है नहीं। खुमावो, खुमावो इन इंग्लिश इट मीन्स थैंक यू, और उर्दू में इसका मतलब है शुक्रिया। आनिया, आनिया इन इंग्लिश इट मीन्स यू आर वेलकम, और उर्दू में इसका मतलब है तुम्हारा खैर मकदम है। नेक्स्ट। चिंचा इन इंग्लिश इट मीन्स रियली, और उर्दू में इसका मतलब है वाकई। वे इन इंग्लिश इट मीन्स वाई, और उर्दू में इसका मतलब है क्यों। मी अनहे, मी अनहे इन इंग्लिश इट मीन्स आई एम सॉरी, और उर्दू में इसका मतलब है मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट। खारे इन इंग्लिश इट मीन्स ओके, और उर्दू में इसका मतलब है ठीक है। चेबल, चेबल इन इंग्लिश इट मीन्स प्लीज, और उर्दू में इसका मतलब है बराए मेहरबानी। थंगियोन हाजी, थंगियोन हाजी इन इंग्लिश इट मीन्स ऑफ कोर्स, और उर्दू में इसका मतलब है बिल्कुल। फ्रेंड्स, that was all about today's tutorial. I hope you like it. Please like this video, subscribe to my channel and share it. दोस्तों, उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।